गुजरात के वडोदरा के मांडवी दरवाजा इलाके में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। वडोदरा के मांडवी दरवाजा इलाके में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। मांडवी दरवाजा के पास स्थित शाह हस्तिमल आईदानजी नाम की दुकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दांडिया बाजार और पानीगेट फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि दुकान में पारंपरिक ड्रेस मटेरियल और कपड़ों का व्यापार होता था। आग सबसे ज्यादा गोदाम में लगी, जिससे बड़ी मात्रा में सामान जलकर खाक हो गया। માંડવી ગેટ પાસે આગ લાગેલી એવો કોલ મળતાની સાથે અમે આગના ઘટના સ્થળ પર આવી અને આગને કાબૂમાં લીધેલ છે અને દાંડિયા બજાર અને પાણીગેટની બે ટીમ અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે। નુકસાન અને કયા કારણોસર આગ લાગી હજુ જાણવા મળેલ નથી। અમને ફાયર સેફ્ટીના સાધનો તો જો અમે કોઈ તપાસ કરી નથી, પણ તપાસનો વિષય છે। બિલ્ડિંગ એટલે બહુ લગભગ 50-60 વર્ષ જૂની બિલ્ડિંગ છે અને પીડિયાવાળું મકાન છે। पर एसी ने आउटर पार्ट पर एसी नो शॉर्ट सर्किट थયું હશે એ હિસાબે આગ પકડાઈ ગઈ। કપડાની દુકાન છે। હા, કપડાની દુકાન। આ દુકાન તો 95 વર્ષ જૂની છે અને ખાસા ટાઈમથી રનિંગમાં જ છે એવું અંદાજો આવી રહ્યો છે। હજુ બુક્સ ચેક કરીશું એટલે ખબર પડશે। દુકાનમાં ફાયર સેફટી જેવું એટલે આમાં પાણીના જગ્સ નહીં હતું, બીજું કશું નથી।